बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नईम है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए काम करता हूँ मैं। तो आई हैव बीन ऑनर्ड के पार्ट ने मुझे इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए, चेयर करने के लिए कहा है। तो सीक्वेंस ये है कि हमारे पास 3 प्रेजेंटेशन। आई होप दैट वी डोंट हैव एनीवन सिटिंग हियर हु कैन नॉट मेक सेंस आउट ऑफ उर्दू, तो आई कैन कंटिन्यू टॉकिंग इन उर्दू। हाँ, सब हम पाकिस्तानी हैं। तो the sequence I am opting that I am preferring those who are physically present here. तो अरूबा हक हैं, इनको हम पहले रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद शिराज साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने पेपर्स प्रेजेंट करें, और उसके बाद फिर नुमान सादिक, ये हमारे पास जूम पे हैं, तो इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं फ्लेक्सिबल हूँ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन के बारे में। हम ये देखेंगे कि अगर उनकी जो प्रेजेंटेशन टॉक बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इनलाइटनिंग है, तो हमारी कोशिश ये होगी, और आपके ज़ाहिर जहनों में सवालात होंगे उसके बारे में, आपने सुना होगा, समझा होगा, आप कुछ पूछोगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन उसके फ़ौरन बात कर लें। लेकिन अगर हमें सारी बातें समझ में आ रही हैं और कोई छोटी बातें, तो आई वुड आस्क यू, रिक्वेस्ट यू टू रिटेन द क्वेश्चंस, राइट देम डाउन समवेयर, और जब वो कंक्लूड करेंगे तो फिर हम प्रेजेंटर्स को कहेंगे कि वो अपनी सवालों के जवाब दें। तो आई एम रिक्वेस्टिंग अरूबा स्केलिंग रास्त, स्टेट बैंक की ऐप है, फॉर कैशलेस पाकिस्तान, लेसन्स फ्रॉम इंडियाज यूपीआई, टेक्निकल डेटा एनालिसिस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। सो अरूबा, प्लीज, अरूबा हक एट ऑल, प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, distinguished guests and members of the organizing committee. I am honored to be here today at the 38th AGM conference organized by RAST, PI. I'll be discussing is scaling RAST for a cashless Pakistan, lessons from India's UPI, a technical data analysis and policy recommendation. With particular focus on similarities and differences between RAST and UPI, and I'll focus on technical performance and policy framework between UPI and RAST. I would like to express my gratitude to PIDE, Pakistan Institute of Development Economics, and Pakistan Society of Development Economics for organizing this conference, and I look forward to be engaging with you all after my presentation, and I'll happily take your questions. Thank you. First of all, I'll play a video regarding India's UPI, in which you will be able to understand how UPI is functioning in India. बम्बो गाड़ करके उसमें जैसे झंडा हम लोग फहराते हैं, होस्ट करते हैं, उसी तरह हमने उसमें वाईफाई डिवाइस या फिर मोबाइल ऊपर लगा करके और नीचे बैठ करके हमने नेट चलाने लगा। These QR codes are synonymous with the UPI revolution in India. All one has to do is scan, type in the amount and make the payment. Within seconds, it's done. पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए। ऑनलाइन पेमेंट जो होती है उससे पे कर रहा है, हमें कैश की दिक्कत नहीं आती क्योंकि कैश कैरी ही नहीं करना पड़ता, उससे हम कंफर्टेबल रहता है, सेफ रहते हैं हम लोग। To do this for over 1 billion people required building an enormous amount of infrastructure. So currently, after seeing the video, you can see how UPI is spreading in India since 2017, and it is able to achieve 300 million users over these years. Our answer to UPI is RAST. Basically, RAST is an instant payment system made by State Bank of Pakistan on the lines of UPI. So basically, UPI's infrastructure is based on Unified Payment Interface, which is operated by National Payment Corporation of India. It is run by an application program interface and API. API is a system where fintechs, apps, and banking accounts are connected through a system where payments are transacted within seconds. Why RAST? The main question remains, why RAST? So Pakistan's Digital Pakistan Policy 2018 and Pakistan's current initiative of Uran Pakistan 2035 are the main benchmarks for which RAST has to be scalable and has to
onboard many users. Currently, Rast is not being utilized to its full potential. We have 100 million population in Pakistan, out of which 79% are adults, and these 100 million people are unaccounted. So we are basically a cash dependent economy, and we have low tax compliance due to using cash. Secondly, gender and geographical challenges are also main hurdle to Pakistan's economic issues, and it's a main factor behind going cashless. Pakistan's digital financial services are below globally and regionally as compared to India and Bangladesh. Motivation behind our study is to understand the main gaps which are not allowing RAS to scale at a grand level as compared to UPI. Currently, there are many technical issues and policy issues connected to it. We have focused on these main issues, and over our study, we are going to try to answer those. Objective behind the study was to assess RAS current design, its scalability, and adoption performance in comparison to UPI. Secondly, we are comparing UPI as a benchmark for Rust. Thirdly, to extract actionable lessons from UPI's Open API. And Open API means that it is uncentralized, whereas Pakistan's Rust API is centralized, which is governed by State Bank of Pakistan, which allows it to go through many red tapeism. Fourthly, we are here to align digital payment infrastructure with Pakistan's broader economic goals. As mentioned in Uran, Pakistan, we have a target of $60 billion US, and we have to achieve a 6% GDP growth rate during these 20 years. Finally, to propose a reform roadmap to focus on financial inclusion of the lower middle income and middle income population of Pakistan, which is like majority of our population is in this income bracket. Now, the methodology behind our paper was we have carried out a comparative analysis which is focused on UPI and Rust, and we have compared we have taken data from those both the platforms. Secondly, the qualitative analysis is based on system architecture, interoperability, and API openness, and merchant onboarding mechanism. Lastly, the qualitative analysis of this paper is based on transaction volume, processing speed, and user and merchant adoption figures. The basic results and discussion on our paper were that UPI has achieved user target of 300 million active users, which is massive in comparison to Rust. Rust is only able to achieve 36 million users till date, till its launching. Secondly, India's zero MDR has allowed its penetration into its society, where we are still in like gray area of what is actually the MDR operating under Rust. There is tentative figures that there are 0 to 0.2% MDR charged over the transactions. Now we will understand how Rust's technical efficiency is in comparison to India's UPI. India's UPI is currently maintains a 99.9 uptime. Now, uptime here means that in a month, it's only 43 minutes not operational. Whereas in comparison to Rust, it's 99.50%. It accounts for 2 hours per month that Rust is not functional. This is the major hurdle which is not allowing Rust to scale at a massive level due to its restraints technically. Secondly, our TPS is way below than India's UPI, as India's UPI is handling 1 lakh transactions per second, and we are only catering to 1,000 transactions per second. We have to look into it and resolve this issue. Secondly, the system architecture is that
this is the main point behind our research, that UPI is operating under a decentralized API system which is run by India's institutions but not by State Bank or their revenue bank. Pakistan's API is currently controlled by State Bank, which has hurdles of integration, like fintechs are unable to attain the access for RAST as they have to attain a license which is achieved through State Bank's permission. Now there are trust and security issues. India's UPI is driven by AI and Pakistan's RAST is operating under a basic inscription model which is way below India's UPI. India's success was attained through UPI as they have aligned their Aadhaar card system and Jan Dhan system with its UPI system, whereas RAST is still behind it, as API mandates offer merchant discounts and other facilities to its users. Secondly, what is the importance behind what are the economic factors and future potential of RAST? RAST will allow us, will boost our economy, it will improve our GDP rate, it will make Pakistan a cashless society, which is the need of our need of this present generation. In our conclusion, we have identified that despite being Pakistan's first real-time payment system, RAST is still underutilized due to limited scalability, low merchant adoption, lack of fintech integration, and UPI is scaled quickly because it has achieved an open API, zero MDR policy, public-private cooperation, and scalable infrastructure. Now I'll move with policy recommendations. There are basically 12 policy recommendations which go through, like there's the technical roadmap which have been identified for the integration of new users into RAST. Secondly is the zero MDR and consumer protection that RAST has to achieve. Thirdly, the incentive to give incentives to financial ecosystems so that they can join RAST, such as fintechs and startups can become part of RAST. Sixthly, the robust legal and security framework, which we all know that Pakistan's legal and security framework is still behind India. Seventhly, digital literacy is behind India a lot because we are still catching up to India's digital literacy, and we can achieve that through TV, radio, and social media campaigns. Eighthly, the continuous monitoring and KPI audits. We have to achieve these KPI monitoring and audits in RAST as well. Ninthly, in order to attain success, we need a public-private technological partnerships, as government institutions are working as according to their limitations, but we need private companies and their assistance to scale this. We have to upgrade core infrastructure and invest in cloud-based architecture to support scalability, and again integrate AI-based fraud detection system, which UPI is already operating under. Finally, we have to give incentives to users and merchants so they can onboard this RAST instant payment system by giving them discounts, rewards, and credits. Finally, we have to improve UX for accessibility. As we know, we have multiple languages being spoken in Pakistan, and we have to make RAST accessible for all the language currently spoken in Pakistan. And this will help RAST to scale as compared to UPI. Thank you. आपने क्या मेथोडोलॉजी इख्तियार की कि आपकी 12 पॉलिसी एप्लीकेशन आई? आई वुड लाइक यू टू ब्रीफली टच ऑन दैट. दूसरी बात आप ये बताएं कि इंडिया में 300 मिलियन पर नंबर बताया, हमारे पास 36 है, तो क्या हमारी जो कैपेसिटी है रास्ते की, इज इट फुली यूटिलाइज्ड? तो आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे और कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो ये बताएं कि भाई चिकन और एग का प्रॉब्लम भी है. उस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें बताइएगा कि क्या
आपकी रिसर्च क्या बता रही है? I would request you to take the जी, seat sir. and Thank you, sir. ponder, and we would like you to enlighten us with these answers and other questions that we have from the audience. And now I would go back to the sequence which I was given with. तो मैं नुमान सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो comparative analysis of the contribution of digital and traditional financial inclusion towards financial performance and stability of banks. इस पर बात करें. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, sir. Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. My name is Muhammad Naman Sadak and I'm currently working as a lecturer at Government Boys Postgraduate College Bagh. Besides this, I'm also pursuing my PhD from Hamdard University. Today, I'm very delighted to present my research paper on the topic comparative analysis of the contribution of digital and traditional financial inclusion toward the financial performance and stability of the banks, evidence from emerging South Asian economies. We are living in the era of disruptive technologies, where modern technologies are significantly transforming the every sector of the world. This sector include health sector, education, transportation, and communication sector. These disruptive technologies not only transform this sector, but these disruptive technologies also transform the banking sector and financial sector. In recent era, financial sector significantly observed the digital transformation in terms of internet banking and mobile banking. And in recent time, we also observing the WhatsApp banking using the help of AI technologies. Although these technologies are significantly important for consumer for providing uninterrupted financial services, and we observe this in COVID-19 periods. Besides this, this technological innovation is also important to improve the financial inclusion in the economy as well as to improve the economic growth and environmental sustainability. And research shows evidence from developed countries. As we say, digital financial inclusion has certain benefits such as it's provide uninterrupted financial services to the customer. It is also beneficial for banks to include more people in the financial system, as well as it is also important for the economic growth, and as well as it is also important for the environmental sustainability. But in developing countries such as Pakistan as well as in the South Asian region, there are certain limitations there are certain restrictions that restrict individuals to adopt these financial technologies. One of them is the internet connectivity. Second one is the financial literacy as well as in the cyber security issue. These are the major issues that restrict the individuals from these South Asian countries to adopt these financial technologies. Based on these technologies or based on these issues, in South Asian countries as well as in the Pakistan, most of the banks or financial institutions not only focus on the digital technologies, but they also focus on the traditional financial system to provide banking services to the individual. Both digital financial services or digital system as well as the traditional system has required massive investment. In terms of digital financial system, banking sector has required massive investment in terms of technological investment, and in terms of traditional banking system, in terms of branches, banks are required massive investment. And in South Asian region, banks are at the same time they are investing in digital technologies as well as they are investing in the traditional infrastructure to provide financial services to the individual. Here a question is arise, when a bank is making investment in digital financial infrastructure as well as in the traditional infrastructure in terms of branch network, how they can improve or which one is the more beneficial for banks in terms of their financial performance as well as in terms of their financial stability. And this one is the study, and one of the most important motive behind this study is to empirically provide the evidence to the policymaker which one of the investment platform is beneficial for the banks itself to improve their financial performance and improve to their financial stability. Besides this, we also provide policymaker to using the results they can make policies, and similarly in the South Asian region we can improve the financial inclusion based on these results. Following are the objective of the study, we first want to compare the traditional financial system as well as the digital financial system and want to compare which system is the more beneficial for the banks in terms of their financial performance as in terms of their financial stability. As well as we want to provide policy guidelines to the individual or to the policy makers how we can improve the financial inclusion in Pakistan as well as in the South Asian region. To conduct this study,
we selected the 3 banks from the South Asian region. These banks are the Bangladesh, India, and Pakistan. And the reason for selecting these countries was the availability of the data of only these 3 countries. And we selected the 68 banks from these 3 countries, and the period of data included from 2010 to 2022. And we collect this data from NEST as well as from Beria. In our model, our dependent variable is Z-score, that is a proxy that shows the bank stability, and second model is second dependent variable is the widely used proxies that are return on asset as well as the return on equity. To measure the digital financial inclusion or fintech, we use number of ATM per 1,000 adults, debit card, credit cards, mobile money transactions, value of mobile money transaction, and mobile money agent outlets. As well as to measure the traditional financial inclusion, we use the number of commercial bank branches per 1,000 kilometer square, as well as the number of bank branches per 100,000 adults. Similarly, we also use the conventional depositor accounts as well as the borrower accounts from the banks. And this data we also collected from the WDI, World Development Indicators. Here is our model. Along these independent and dependent variable, we also use a certain control variable. These included the diversification, bank size, capitalization, credit risk, liquidity, as well as the management quality. Similarly, we use a similar model for the stability. Here is our framework for data analysis. We first conduct the descriptive statistics, then we conduct some pre-testing that include the heteroscedasticity, multicollinearity, and autocorrelation, and based on these tests we run the system GMM test. And after running the system GMM test, we also run the post-testing that include the validity of the instrument as well as the second order autocorrelation. Here are our results. I have excluded the simple descriptive statistics. First table shows the pre-testing. That one is about the multicollinearity analysis. We run the VIF test that shows that there is no issue of multicollinearity in our data. Similarly, we also check the autocorrelation, and the result of the autocorrelation test shows that there is a problem of autocorrelation in our data. At the last, we also conducted the heteroscedasticity test using the White test as well as the Bruch-Pagan test to find the problem of the heteroscedasticity in our data. And the result of the Bruch-Pagan test shows that there is a problem of heteroscedasticity in our data. Based on these pre-testing, we selected the system GMM method, that is the most advanced method that removes the problem of heteroscedasticity, autocorrelation, as well as the multicollinearity and endogeneity. So based on the results, we find that digital financial inclusion as well as the traditional financial inclusion has an impact on bank profitability in terms of their return on asset. In our model 1, you can see that this ratio or the coefficient value is very minor, 0.046, as well as this is also very low for in model 3 for traditional financial inclusion. It's mean our banking system, or there are many people are unbanked in Pakistan, so our traditional infrastructure as well as digital infrastructure has very limited impact on the profitability of the banks. Similarly, we also use another proxy, that is return on equity. Here we find that digital financial inclusion has more significant impact on the bank profitability in terms of ROE as well as return, as well as traditional financial inclusion also has an impact on bank profitability in terms of ROE, but the coefficient of DFI shows that DFI has more impact on the bank profitability in terms of ROE. It's mean that we can use equity in a better way while using the digital infrastructure. Similarly, we also find the impact of digital financial inclusion as well as the traditional financial inclusion on the stability of the banks. Here we find the results that digital financial inclusion has a positive impact on the stability of the banks, where we find that traditional financial inclusion has a negative impact on the financial stability of the bank. It's mean here we find a policy guideline that if we investing more and more in traditional financial system, then our banking system will take more risk and it will not gain more stability in future. But against, if we invest more and more in digital financial inclusion, this system will not only improve the profitability of the bank, but it also improve the stability of the banks for long run. Based on the results, we concluded that digital financial inclusion is more beneficial for banks in terms of their profitability, ROE and ROA,
As well as we also find that digital financial inclusion enhances the stability of the banks, as we find the evidence from the South Asian region. These results suggest that shift from the traditional banking system to the digital banking system improves bank performance and enhances the stability of the banks in the South Asian region. At last, policy recommendation. This study provides empirical evidence regarding the role of DFI in the banking performance and stability. Using the results, policymakers can develop strategies that integrate technologies in the financial system and extend financial inclusion in the South Asian region by including more people in the financial system. This inclusion will boost the banking system and contribute to the economic growth as well as to the environmental sustainability. Based on these results, bank management can increase its performance and stability by engaging more customers, improving its reach, and by reducing the transactional cost. A well-integrated system also reduces credit risk, improves liquidity management, increases operational efficiency, and improves saving and investments. Thank you. Thank you very much for providing me this opportunity on this very important session, very timely and relevant regarding digital payments and this digital financial inclusion. These two are very interesting papers, and I really appreciate the hard work done by the authors and their co-authors. So, the first one is a very nice comparison between India and Pakistan, between UPI and Rast. That's really a very good one. But I think numbers should have been presented by per million population or per 10 million population like this, because I am not getting that 300 million and 12 million. No, I have to divide it by their population as I have to see my population. So that would have made much better sense. And what are other socio-economic factors which have played role in in better performance of UPI, just other than API usage? Because the lesson we are getting is that just using API is such a powerful tool that this will boost Rast just like as in UPI. There are so many other things like lack of trust in digital payments. Even still today, I am reluctant. So what led India for this type of, trust, whereas we lack this trust, right? That may be another thing, that we have a perception, we have belief that this banking channel and all these things are not very good for being due to our beliefs and all that. So these may be the factors basically which are driving UPI. It's exponentially growing if as per your graph, and we are not getting it. Okay, you have mentioned mixed method research, but frankly speaking, I did not find it anywhere in the paper, right? So usually we have this, Naeem Saab can bail me out, that usually we have this mixed method word used very, we often misuse it than we utilize it properly. So I did not get what is mixed method research, who are your respondents, how you have derived. Naeem Saab has asked a very pertinent question. You have 12 policy implications, but when we read the paper, it's mainly just your opinion. We are not getting, I have tried to find out that is there any analysis given. Yes, very nice comparison is given. It's really a very important thing if you explore it further, that what sort of measures can help Rast to grow better, to help people, right? And what are the factors like rural area? How India is very large rural area. Right? India has, we are more urbanized, if I'm not wrong, than India. Sorry, Naeem Saab is in cheezon pe hum madrat. So, but why India has been successful in UPI than Rast? Right? So these are the things which we expect that in future when you will polish this research,
you will work more on this research, these things will emerge out of your findings, right? Your hypothesis should be, your research question should be very precise one, right? Make your research question, right? This is a factor, और आप एक फैक्टर दे दें, आप ये कह दें कि यूपीआई, देखिए जी, इस एक फैक्टर की वजह से यूपीआई में इतना बूस्ट आया, और अगर हम उस तरह का फैक्टर रास्त में ले आए तो इस वक्त ये 12 मिलियन से, वो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 12 मिलियन से ये हमारा नंबर 18 मिलियन पे पहुंच जाएगा। यानी कि हमें ना वो एक इंटरवेंशन सजेस्ट करनी है एट द मोमेंट। वो बहुत सारी 12 पॉलिसी इंप्लीकेशंस का मतलब ये है कि एंड पे हम सरकार को कुछ भी नहीं दे रहे होते, क्योंकि एक जो पॉलिसी है ना, पूरे लेबर इकोनॉमिस्ट, पूरी दुनिया में लोग सिर्फ एक छोटी सी चीज पे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और 30-30 साल से उनको जवाब नहीं मिलता। जैसे क्या क्लास साइज होना चाहिए ग्रेड 5 तक, आज तक इसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अब अगर मैं 12-15 चीजें दे दूंगा तो उससे ना थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन किसकी करें, 12 चीजों के ऑल ऑफ ए सडन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जाएगी। सो इट्स रियली गुड वर्क, लेकिन इसको थोड़ा सा जरा आप फर्दर आप इसको इलेबोरेट करें, ठीक है? बेशक क्वालिटेटिव कर लें, लेकिन थोड़ा सा जरा क्वालिटेटिव में आप नईम साहब के पास चले जाते, आप स्टेट बैंक के किसी बंदे को फोन कर लेते, ठीक है? आप किसी बैंक के बंदे को कॉल करते, तो ये 8-10-15 बंदों से आप ये इंफॉर्मेशन लेके आप इसको फर्दर जो है वो रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह से अगर आपको कोई इंडिया में यूपीआई के लिहाज से कोई बंदा मिल जाए, कोई ईमेल है किसी तरह से, तो यू विल गेट इट। सर मैं ज्यादा टाइम लूं तो बता दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो है ये आपने इसको जो है ना, जो पॉलिसी आपकी आ रही है वो आपकी एनालिसिस से नहीं आई, ये बात हमने कर ली। और फिर क्या वो फैक्टर है जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कर रहा है रास्त में और मर्चेंट टू मर्चेंट कर रहा है यूपीआई में। असल में आप ना ये बात सिर्फ निकाल दें हमें कि वो क्या मेन फैक्टर है, लिटिल सा सम, ठीक है? तो आपने इस चीज को इस तरह से देखिएगा। तो उसके साथ साथ दूसरे वाले पेपर में थैंक यू वंस अगेन कि आपने डिजिटल इंक्लूजन को बैंकिंग परफॉर्मेंस से लेके चले। आपने जो है कहा जी कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी तो उससे जो है वो बेसिकली डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है दैट विल लीड टू बेटर प्रॉफिट्स एंड मोर स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही है। अब चूंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा इकोनोमेट्रिकली जो है वो बहुत हार्डकोर इकोनोमेट्रिक्स में गए हैं, तो थोड़े से कमेंट दे दूं ताकि आप उसको इम्प्रूव कर लें। एक तो ये आपका मॉडल स्टैटिक है, वेयर एज आप टाइम सीरीज डेटा यूज कर रहे हैं तो इट शुड हैव बीन डायनेमिक। अगर आप डायनेमिक मॉडल, उसके आपने कहा ऑटो कोरिलेशन है, ऑटो कोरिलेशन को प्रॉब्लम नहीं होती, असल में लेग्स ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं पूरे डाले होते तो इस वजह से ऑटो कोरिलेशन आई है। आप वो लेग डाल दीजिएगा, आपका मसला हल हो जाएगा और बहुत सारे वेरिएबल्स जो सिग्निफिकेंट है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो एंडोजेनाइटी इज अनदर इशू जिसको आपने ना, और आपने हेट्रोस्केडास्टिसिटी और ऑटो कोरिलेशन का एक ही सिंपल एक लाइन लिख के ना कि जी मैंने जीएमएम यूज किया है बस इसलिए, उससे कुछ नहीं होने जा रहा, टेक्निक से नहीं होगा। फिर रिसर्च क्वेश्चन आपका प्रिसाइज होना चाहिए। आपने 5-6 रिसर्च क्वेश्चंस बना दिए हैं, हर वेरिएबल जो राइट हैंड साइड पे है वो आपका इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने पहले बोले, मैंने कहा एक कोई चीज ऐसी आपने बतानी है। बैंक साइज, आपने बैंक साइज को बिल्कुल कहीं कंसिडर नहीं किया, यानी कि वो एक आपके पास बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सच्ची बात है पैनल डेटा से ना कुछ खास चीजें निकला नहीं करती, स्वाइस की कि मेरी और आपकी ये कोई ना वो हो जाती है। तो हमें ना पाकिस्तान के लिए कोई चीज ड्राइव होती हुए नजर नहीं आ रही, ठीक है? जस्ट ये तो सबको, तकरीबन सबको आइडिया है कि डिजिटल इंक्लूजन होना, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है ये सोसाइटी को बेटर ऑफ करेंगी, मतलब बस ये सबको एक आइडिया है। तो इस चीज को जरूर देखिएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपकी ना थोड़ी फ्लॉड है, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, आई माइट हैव मिसरेड इट, जो नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती और वहां नेगेटिव वैल्यूज हैं। जी स्कोर जो आपने डिफाइन किया, यूजुअली हम जी स्कोर इस तरह से कहीं डिफाइन नहीं करते, मे बी आई हैव मिस्ड दैट पॉइंट, वो फिर आप रेफर कर दें, क्योंकि जी स्कोर तो हम नॉर्मलाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं ना डेटा को। आपने जी स्कोर को बिल्कुल, और प्रॉफिट्स आपके नेगेटिव हैं
मे बी उसकी डेफिनेशन में कोई ऐसी चीज़ आई हो, तो ये आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स इन चीज़ों को देख लीजिएगा। और जो नंबर्स है ना, अगेन आपने कहा मल्टीकोलिनियरिटी इशू नहीं है। एटीएम पर 1000, डेबिट कार्ड पर 1000, क्रेडिट कार्ड पर 1000, तो बेसिकली आई माइट बी रॉन्ग, बट इनको तो आपस में हाईली वो जो है रिलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर डेबिट कार्ड आपने बहुत ज़्यादा कर दिया और नंबर ऑफ एटीएम्स कम है, तो फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा। आई थिंक दीज वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, और शायद एक दूसरे की ये प्रॉक्सी हैं, एक आध निकाल भी दें, तो इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा और रिजल्ट्स को थोड़ा सा सॉफ्ट टच दीजिए, क्योंकि सिर्फ रिग्रेशन कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंट हो जाना इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इस्टेब्लिश नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा आप रिफाइन कीजिएगा। ठीक है, डायनेमिक मॉडल लगा लीजिए, तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें आपका एक बड़ा अच्छा जो है वर्केबल पेपर बन जाएगा। सर जी, थैंक यू। देखिए, वो जाहिद साहब ने सर्जरी की, मैं थोड़ा सा मरम रखूं। सॉरी फॉर लेबलिंग यू एज अ बैड कॉप एंड एज्यूमिंग गुड कॉप फॉर माई सेल्फ, टेक दिस लिबर्टी। ये देखें, जाहिद साहब ने बातें सही की हैं कि आप एक कोई क्वेश्चन पर्टिनेंट सोच लेना और फिर वहाँ से बैकवर्ड शुरू करना कि भाई इसको इस चीज़ का आंसर देने के लिए मुझे किस तरह की स्टडी करनी है, फिर किस तरह का डेटा चाहिए, फिर कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी लगानी, ये वो सब डिटरमिन करता है। तो जब तक हम क्वेश्चन पे क्लैरिटी नहीं करते ना, तो हमें रिसर्च का रास्ता भी नहीं समझ आता, और फिर हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो इतनी बड़ी कहानी है उसको हम, या इतने सारा डेटा और इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतने सारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आ गए हैं, उसमें हम कहानी क्या डालें। तो ये हमारी लिमिटेशन है, और इसको जो यंग इकोनॉमिस्ट हैं, यंग रिसर्चर हैं, इसको नेगेटिव ना लें। ये आप इस तरह के फोरा में जाते हैं, क्रिटिसिज्म लेते हैं, उस पर ओपन होते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार मैं इसको किस तरह करूँगा नेक्स्ट टाइम, तो आई वुड इम्प्रूव एंड आई वुड ट्राई टू एड्रेस द क्वेश्चंस जो रेस किए गए। तो जो जाहिद साहब ने आपको बातें बताई हैं उनको गौर से सुने। इकोनोमेट्रिक्स में जो बात की तो ठीक है, वो बहुत कंडेंस थी इकोनोमेट्रिकली, लेकिन उसमें से इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस सामने नहीं आ रही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें उस पर बात करेंगे अभी। और जो पहली वाली स्टडी है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं कि आप 100 मिलियन को आप 36 से, एक्सक्यूज मी इफ आई एम मैसिंग विद द नंबर्स, आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि भाई उस डिजिटलाइजेशन की डिमांड है कि नहीं है। काइंड ऑफ सेम थिंकिंग इफेक्ट्स ऑल्सो कि भाई बैंक की परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट होगी ट्रेडिशनल फाइनेंस से और डिजिटल फाइनेंस से, कि उसका मकसद क्या है। वो कंज्यूमरिज्म को प्रमोट कर रहा है, सेफ्टी की वजह से हो रहा है, सेविंग को मोबिलाइज कर रहा है, कर क्या रहा है। तो अगर हम शुरुआत वहाँ से करेंगे तो फिर हमें रास्ता भी सही नज़र आएगा और उसके जो माइलस्टोन्स हैं उसका भी हमें अंदाज़ा होगा। तो with this, I would like to request the third presenter of today's session. Assalamu alaikum, bismillah. Thank you so much for having me. I'm Asif Shiraz. I am a graduate of Texas State University, and I've been living in US in the industry. So I'm very familiar with, I'm in the software industry, so I'm very familiar with the cryptocurrencies and all that. So I thought this would be a very interesting presentation. The purpose of this presentation is basically to examine Bitcoin's potential as a catalyst for financial inclusion, economic resilience, and technological innovation in Pakistan. The motivation of this study is basically that a lot of nation states nowadays, even the United States, has established a strategic Bitcoin reserve. And that kind of is a watershed moment of the recognition of Bitcoin's significance from a national security and national economy perspective. We know that not just the United States, but many other countries like El Salvador and other countries, they have adopted Bitcoin as an official currency. So in Pakistan, there's been a lot of misunderstanding about Bitcoin, especially that raised by the religious clergy who were very suspicious about the religious aspects of Bitcoin. And so we wanted to see what work has already been done and do a study to assess what research and what proposals from both a religious and economic perspective have been presented
in support or in against Bitcoin. So our goal is basically to see whether it has a net positive on, first, of course, the subject of this entire discussion, the digital transformation, economic growth, and then I will also talk a little bit about the Islamization of banking, because Bitcoin has a very intricate relationship to that. So the objectives are to evaluate the existing literature on Bitcoin's merits and demerits. We want to see its potential benefits. We want to do fill the gap in understanding, not maybe fill the gap, but basically pique the participants of this audience's interest to go back home and do some more research, and what we say in the Bitcoin subculture, go down the rabbit hole, and so you can understand more about what this entire phenomena is. And then finally, of course, to suggest some policy guidelines. So what we did was basically look at existing research papers that have been written on the subject, but besides only the academic work that has been done, Bitcoin is so new, and it has kind of like it's a cultural phenomenon to an extent. So we also consulted different books that have been written on Bitcoin's economic significance. And then there are a lot of articles and podcasts, because it's such a cutting edge thing that a lot of work is still out there in the wild on the internet. So we looked at that to assimilate our study. So basically, it's a comparative analysis of different thought leaders' perspective on Bitcoin from a religious, political, and economic perspective. So the very first thing that comes up, this like Islamization of the economy is a completely different subject, not the focus of our current event, which is basically digital transformation. But like I said, you have to talk about it a little bit. So one thing which we realized from our study of the past papers written on Bitcoin is that the Sharia analysis of Bitcoin has been quite superficial and misguided. That seems like a very arrogant statement, but there are papers that discuss these things in detail, and after reading through it, you do realize that although there are a lot of like towering figures who have weighed in on their opinion, on their religious opinion, like muftis and scholars, and but there is a lot of gap in their understanding, which has kind of led to a mistaken interpretation and a mistaken representation. Technically, there are some opinions, very strong opinions, that have come out to say that after gold, Bitcoin is the only Islamic form of money that is currently available. And because gold really was a historical money, you can't really take gold and spend it anywhere today. So that reduces it to the fact that Bitcoin is today literally the only Islamic Sharia compliant money that is available to us. And that fact is lost to a lot of people. So we want, as part of this paper, to pique people's interest and let them go and research more on that. Paper currency, the Pakistani rupee, fiat currency all over the Muslim countries. It's issued against government bonds. There's a interest-based mechanism that does that. So paper currency is not as Islamic as Bitcoin is. So the second interesting fact about Bitcoin is it contributes a lot to the wealth building in a country. So Bitcoin adoption allows money to be reinvested in the country. Right now, if you give people the opportunity to move their money, they think the Pakistani rupee is a depreciating currency and everyone wants to buy dollars or invest in land or do anything which gets you out of the inflationary pressure that we have on the rupee. Now, if you allow people to invest in Bitcoin and normalize the usage of Bitcoin, integrate it into the economy, then the incentive of people to move their money abroad will be reduced, because you can invest in Bitcoin right here in your own country, protect yourself against inflation, and that will cause that money to be reinvested back in our own economy. The second impact of Bitcoin is that as more and people are going to purchase it, there was this interesting statistic that came out about the gold holdings, the gold reserve holdings of different countries. And someone pointed out that India's gold reserves are so underrepresented because their government has a lot of gold reserves, but their people have even more gold reserves. So
when you look at the net assets of a country, you have to not just look at the reserves which the government holds, but also the reserves which the people hold. And so if the people are more wealthy, that means they will have more disposable income to invest back into the economy. So if you give them the ability to protect their savings or expand their savings through legalizing and normalizing investment in Bitcoin, then that comes back into your own economy because the people now have more disposable income to put back in different projects. The third theme, of course, is a medium-term inflation. That word medium is very important here because a lot of people complain about the volatility of Bitcoin, and it is true, it's a very strong negative. But if you zoom out, the highest price that Bitcoin gets at a certain point in time in its entire 12-15 year life, the next 1 or 2 years it crosses that. So whoever loses money, he loses that money if you want to sell your Bitcoin because you had to do something 6 months down the road and you are caught in that volatility cycle. But if you zoom out, it is always going upward in a net value. Another angle we looked at for adopting Bitcoin is the expansion of our industry. So it promotes the expansion of industries that are allied to Bitcoin. So that would be like your general software industry, fintech, digital services. Now a lot of a new trend in crypto is to digitalize real world assets. It's called RWA tokens. And real estate and energy are two factors that are a lot of potential there. So when you enable Bitcoin, you basically allow allied cryptocurrency projects, although that's an entirely separate discussion that I'm not a fan of those. And there are studies that say that you lose more money than they don't have a lot of real world utility, but that's a different subject. But still, you have to recognize that the allied cryptocurrency scene also has a huge financial impact. And you can, your software industry can grow a lot by expanding into that. Industry introduces efficiencies in financial industry. That's a goal in itself. So I want to separate point 1 from point 2, where point 1 we're really saying is that if you have a bank and the bank is digitizing itself, so that opens up an avenue for a software company in Pakistan that the bank contracts and says, I want to launch a digital app for my customers. And so that's covered in point 1, where you now have more business for the fintech and software industry. But the point 2 is really saying, do you really need a bank anymore? Because what Bitcoin is doing is cutting a lot of the trusted third-party middlemen from the financial sector and bringing it into the mathematical and cryptographic trust that eliminates a lot of the investment in money and trust that you have to invest in the middleman. And so it's a complete reconstruction of your financial industry where you may save a lot of money by cutting down on these middle services. For example, insurance, escrow, secure payments. There's a lot of actual real world efficiency in terms of money that Bitcoin introduces. The third very important factor which is happening with Bitcoin is that it is being considered as a store of energy. So of course it is a store of value, but it is also a store of energy because it takes a lot of energy to produce one Bitcoin. And so once that Bitcoin has been produced, that one Bitcoin now represents the energy that has been taken to produce it. So what people are doing nowadays, you know about people who are familiar with hydropower and all that. There's like a river is flowing and you have to generate the electricity. You cannot store that electricity. You have to distribute it out in the grid. And if people are not using it, then it is just going to waste. But what Bitcoin enables you to do is that you can run your energy producing systems at night. You can divert it back to producing Bitcoins. And now, at the time when people are not using energy for air conditioning or their homes, it is diverted to Bitcoin production. And that Bitcoin now can be sold. And so your power plant is now more efficient because it can keep working day and night to fill those gaps that it cannot do.
Then it has a very important role in financial inclusion. It can reach the unbanked population and can contribute to microfinance and crowdfunding. This is one of the top applications of cryptocurrencies currently: crowdfunding, decentralized fundraising, and allowing people to use apps that are used for remittances and money transfers much more efficiently without relying on a banking app or a centralized banking infrastructure. So if you continue down that road, the ability of Bitcoin to, the overhead of owning Bitcoin and transferring Bitcoin is so little that it is an excellent tool for financial inclusion, because it costs very little and pretty much everybody has a phone nowadays. The next thing which is happening with Bitcoin is that there is a whole new internet that is being built by using the same concepts, the same philosophical foundations of Bitcoin. So just like Bitcoin introduced decentralization in finance, we are now talking about decentralized infrastructure, decentralized DNS naming systems. There's a Web5 technology that the founder of Twitter, Jack Dorsey, has started an entire company to promote. Web5 is basically an internet which is not reliant on centralized servers or centralized name servers. So just like Bitcoin, no country will have ability to censor internet anymore. Right now they can like shut down a website, but if you build an internet on top of similar decentralized principles, then no one country will be able to shut it down. So there are completely new solutions and synergies between software, crypto, and the physical world, becoming a very viable economic player. Then there is the last angle of Bitcoin, which is national security. El Salvador was the first country that started making Bitcoin. It actually made Bitcoin a recognized legal tender along with the dollar, and ever since they started buying Bitcoin, their reserves have grown like $96 million in profit. A lot of other countries are now seeing Bitcoin as a strategic national asset, because just like central banks and governments have gold reserves, they're also now starting hoarding Bitcoin as a national asset. So there are a lot of political reasons for adopting Bitcoin. For example, when Russia invaded Ukraine, their banks were frozen by Europe, but if they had assets in Bitcoin, nobody could actually freeze that. So that would level the playing field at an international financial level. So my conclusion is basically that the potential of Bitcoin has been grossly underestimated and misunderstood. Bitcoin is a friend of the people, and it is a second chance to catch up to economic growth and financial modernization. The policy recommendations is legalize Bitcoin and bring in savings and earnings in the tax net, allow banks to offer Bitcoin-based saving accounts, create a national Bitcoin reserve similar to the United States, and create regulations to protect the nation from non-Bitcoin crypto scams. Because when you're going to bring in Bitcoin, you're going to bring in a lot of all the ICO scams that are happening out there in the crypto world. So we want the benefit, but we don't want that negative effect. All right, thank you. That was it. सर थोड़ा मुश्किल वाला टॉपिक है, हमारी समझ से थोड़ा सा बाहर हो गया. अच्छा, ये ना चैलेंजेस ओवरऑल वैसे भी इकॉनमी में जो है ना डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के बाद बहुत बढ़ गए, और ख़ास तौर पे रेगुलेटरी चैलेंजेस, क्योंकि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जिस तरह की पेमेंट सिस्टम अब आ गए, ये आपकी बनी थी तकरीबन 2000 ये प्री जो है वो उसमें. अब थोड़ी सी जो वरीज हैं वो ये वाली हैं कि इन्फ्लेशन सोसाइटी में बहुत बढ़ गई. अभी हम माने नहीं माने, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है. ठीक है जी. तो ये जो बिटकॉइन के सिलसिले में, और बिटकॉइन की प्राइस वोलेटिलिटी भी बहुत हाई है, तो ऐसे केस में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसके साथ कैसे अलाइन करेगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम होने जा रहा है. मनी जो है वो किस तरह से, तो ये वो रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं जिस पे मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि वी हैव टू थिंक अबाउट. ठीक है, जब हम ये बात करेंगे तो हमें ये चैलेंजेस वो वाले हैं जो कि हमें फेस करने पड़ेंगे.
ठीक है, श्रिया और वो जो है ना उस पे सर मेरे हाथ बंधे हुए, मैं बात ही नहीं करता, मैंने जिंदा रहना है। ठीक है, वो मेरी डोमेन से बाहर है सर जी, मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है, वो मेरी डोमेन नहीं है सर। तो ये एक ना आपके पास बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के बारे में आपको अपने तौर पे जब भी आप नेक्स्ट काम करें, ठीक है, तो इन्फ्लेशन, अभी हम इंटरेस्ट रेट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इट मीन्स कि बिटकॉइन के बाद हमारे पास वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट। जैसे एआई पे जो सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा है वो सर ये है कि एआई न्यूक्लियर पावर तो कंट्री बना सकते हैं ना, एआई तो हम इस हाल में बैठे बैठे बना सकते हैं, तो उसकी रेगुलेशन हमारे लिए चैलेंज बन गई है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो बुक है एआई नीड्स यू। ये अब बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम आएगा, कैपिटल फ्लाइट अभी हमारे पास होती है ना, जो जी चाहे हम कहें, हमें पता चल गया हमारे इतने डॉलर स्मगल हो रहे हैं नहीं हो रहे। सर बिटकॉइन के बाद तो मेरे पास कैपिटल फ्लाइट का क्या मैकेनिज्म होगा, कौन उसको मॉनिटर करेगा? जहां हम ये कह रहे हैं कि ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, एट द सेम टाइम वो बिटकॉइन ऐसे बगैर किसी चीज के, मैं कमाता इस मुल्क से हूं, वो सारा कुछ एनर्जी इस मुल्क की यूज की है और बिटकॉइन यूएस में चले गए हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट कि जी ये किस तरह से आपके पास साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड रिस्क किस तरह से हैं ऐसी सोसाइटी में जहाँ हाई डिजिटल इनइक्वालिटी है, स्टेबल इंटरनेट एक्सेस है नहीं है बहुत सारे मुल्क के बहुत सारे एरियाज में। तो वहाँ जब हम ये बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक जो है वो इशू बनेगा। ठीक है, और इसकी जो है वोलेटिलिटी किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। सुबह वो जो है $2 का है, अगले दिन $200 का है, तो एक आम आदमी को कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये वो चीज़ें हैं जिस पे हम सबको जो है वो सोचना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी, जब फिर अपनी एनर्जी इंटेंसिव यूज़ है सर। अब बात यह है कि अगर 13 सेंट्स पर यूनिट पे है और 2 सेंट्स पर यूनिट पे है, तो क्या वो बिटकॉइन कितनी एनर्जी से कितना, तो उसकी कॉस्ट उस तरह से, मतलब दैट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस जो है वो हमें जरा बेहतर गाइड कर देता। ठीक है, तो एनर्जी इंटेंसिव यूज आपने खुद भी कहा कहीं और भी जो है इस चीज को, तो वो बेसिकली उसकी कॉस्ट किस तरह से डेवलप होगी, क्या होगा, तो ये वो चीज है। ठीक है, और फिर बिटकॉइन के बारे में सर ये कहते हैं कि ना ये फुली लीगल है ना ये फुली इलीगल है, ये ग्रे जोन है। अभी तक दुनिया में ये पूरी में ग्रे जोन है। तो उस ग्रे जोन के होते हुए हम इतनी जल्दी इस पे जंप करेंगे तो आपकी स्टेप्स ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम केयरफुली मूव कर लें तो दैट विल हेल्प अस अ लॉट। सर ये मेरी वो जो है जस्ट एक जी, ठीक है, थैंक यू। उससे पहले मैं क्वेश्चन दे दूं शिराज साहब को, एंड देन आई वुड अर्ज यू टू प्लीज रेज योर क्वेश्चन। दिस इज द रीजन व्हाई वी असेंबल्ड हियर। शिराज साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आई मीन in your presentation you talked that beside doing so many wonderful things, Bitcoin is also collecting information which in a way which is making the intermediary function redundant, which is making the typical financial sector का जो intermediary function होता है बैंकिंग का, वो redundant कर रहा है। और अच्छी बात है, समझ में आती है कि अब एक लेजर बना रहे हो, डेमोक्रेटिक है, तो इंफॉर्मेशन सबके पास है और वो redundant हो भी जाएगा। So then I was expecting you to shed some light on at least the allied sectors कि अगर फिर भी उसमें volatility है तो क्यों है? Maybe because कोई आपके cross type करते, कोई exploration करते, might not have been a very rigorous econometric study. That's not what I'm saying. कि उनके जो allied sectors हैं, fintech directly related है, banks directly related है, सॉफ्टवेयर डायरेक्टली रिलेटेड है एंड सम अदर्स, तो उनको हम देखते हैं कि अगर इनमें भी वॉलेटिलिटी है तो देन दिस दैट सिचुएशन माइट हैव थ्रोन बैक अ क्वेश्चन ऑन अस व्हाई। बहरहाल, तो दिस इज माय क्वेश्चन। नाउ विद दिस हाउस इज ओपन, प्लीज। ये 3 हमारे प्रेजेंटर्स थे। सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट की थी अरूबा हक एट ऑल, इन्होंने बात की थी कि रास्त जनाब क्यों नहीं ऐसा परफॉर्म कर पा रहा जैसा इंडिया का यूपीआई परफॉर्म कर चुका है, उसकी एडॉप्शन हो चुकी है। दूसरे थे हमारे प्रेजेंटर नुमान सादिक साहब, उन्होंने जो ट्रेडिशनल और डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का बैंकिंग का कंपैरिजन दिया था और उसका इफेक्ट बताया था बैंक्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बैंक्स की और स्टेबिलिटी पे। आखिर में शिराज साहब थे जिन्होंने कहा था कि वी हैव टू गेट आवरसेल्फ टू एम्ब्रेस द इनएविटेबल, दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट्स द रियलिटी। तो उस पर उन्होंने बात की। प्लीज आपके क्वेश्चंस कमेंट्स करें आप।
क्रिप्टो करेंसी है वो बजाते खुद एक नई एसेट क्लास बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके अंदर ना सिर्फ बिटकॉइन है बल्कि बिटकॉइन की इनोवेशन को फॉलो करके बाकी जो सारे क्रिप्टो करेंसीज आपकी आई हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट क्लास बन गई है। आप अभी इवन इन द यूएस आप जब अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करते हैं, वो कहता है कि जी आप जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप क्रिप्टो सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इट हैज़ बिकम एन एसेट क्लास। मगर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वाई हैज़ इट बिकम एन एसेट क्लास। तो जितनी भी एसेट क्लासेस हैं हमारी, दे रिप्रेजेंट सम एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, और उस यूटिलिटी को कैश इन करने के लिए, उससे प्रॉफिट करने के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब जो स्टॉक मार्केट है, व्हाट इज़ इट रिप्रेजेंटिंग? इट्स रिप्रेजेंटिंग योर इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब निशात मिल्स की फैक्ट्री लगी हुई है, वो एक प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल काम करी है। एक्चुअली सर इससे आपका भी क्वेश्चन आंसर हो जाता है कि निशात मिल्स जो है वो जितना कपड़ा बना रही है वो उतना ही बना रही है। क्यों स्टॉक मार्केट में एक दिन उसकी कीमत कम होती है और अगले दिन ज़्यादा होती है? फैक्ट्री में कोई चेंज नहीं आया। तो जो फंडामेंटल्स हैं हमारी इन्वेस्टमेंट सेक्टर के, वो उसकी टेक्निकल से और उसकी वॉलेटिलिटी से बिल्कुल डाइवर्स्ड हैं। वो जिसको कहते हैं कि जी आवाज़ पे मार्केट चलती है, AKD साहब खरीद रहे हैं तो बाकी भी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो बिटकॉइन को भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि उसकी एक्चुअल रियल वर्ल्ड फ़ायदे क्या हैं, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट और पैसे कमाए जा रहे हैं, वो जो वॉलेटिलिटी चल रही है, पैसे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, कमा रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। इट्स अ नेट नेगेटिव। लोग पैसे लूज भी करते हैं, वो फिर बैड प्रेस मिलती है बिटकॉइन को, यार ये क्या फ्रॉड किस्म की स्कैम है। मगर व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू सेपरेट द टू। हमने उसकी ट्रेडिंग को अलग रखना है और हमने उसकी एक्चुअल इकोनॉमिक यूटिलिटी को अलग रख के देखना है। तो क्योंकि उसकी एक्चुअल इकोनॉमिक यूटिलिटी है, इट हैज़ नाउ बिकम एन एसेट क्लास फॉर द ट्रेडर्स, और वो उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो उनको करने दें, और वी शुड फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ इट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ गुड स्टेप, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, बिल्कुल। उससे क्या नहीं होगा? डर नहीं होगा, हाँ, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी। बिल्कुल सही। जी जी बिल्कुल, ऐसा हो रहा है, वो एक क्रिप्टो काउंसिल बन रही है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कि दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। बिटकॉइन इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। यू कैन लूज़ योर बिटकॉइन, दे कैन गेट स्टोलन, या जो बिटकॉइन के अलावा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सम ऑफ देम आर आउटराइट स्कैम्स, दे प्रॉमिस यू अ बिग इन्वेस्टमेंट रिटर्न और पीपल लूज अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। अब होता ये है नॉर्मली कि गवर्नमेंट इज सपोज टू स्टेप इन एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दैट थिंग, मगर द रीज़न वाई बिटकॉइन is decentralized and the entire culture is that of advocating decentralization is because we
know that government has two incentives, and we like one incentive, which is to protect the people from scams and fraud. The second incentive is for the government to protect their own monopoly on money issuance, because Bitcoin is challenging that. इसलिए when government steps in and says, I want to regulate this, we know the benefit, we also know the negative of that. The negative is that the savings capability that Bitcoin is going to give to the people, with too much regulation, that can be taken away. Because ultimately, Bitcoin is a competitor to the State Bank of Pakistan. They are issuing their own currency, we are issuing a decentralized currency, and they are not compatible. So that's why the United States, for all these years, kept trying to suppress it down. Even the Democrats want to do that. So we have to balance that. अच्छा, हमारे जो दो और प्रेजेंटर्स थे, अरूबा और नोमान, अगर इन एक ने यूपीआई और रास पे कंपैरिजन किया था और एक बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी विजावी टीएफआई एंड डीएफआई, तो अगर उस पर कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो प्लीज. ये बदनाम भी काफी हो गया बीच में, स्पेशली ये नैनो लोन्स वगैरह. तो अब आगे फ्यूचर में इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं? उसकी जो उसमें जो बदनामी हुई है कि जी बहुत सुपर हाई इंटरेस्ट रेट्स उसमें चार्ज हो रहे हैं, तो अब चीजें कहाँ हैं और आगे फ्यूचर में क्या नजर आता है? तो ये While anonymizing the person who responded to this question when I raised, and he said that he said that you better check your thinking. We are rather doing a very noble job. The informal lender is exploiting at 100 plus, and if we are charging 45 to 50%, so why you are labeling us as bad guy? We are doing it, and when we do not have any collateral and a lot of things, वो काफी वो subjective चीज आ जाती है. अच्छा, please UPI से. मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ. हमने अक्टूबर 24 में डेटा फेस्ट किया था, डेटा फेस्टिवल. that actually focused on putting the stakeholders in thematic session and encouraging them to think, ponder on one database or fusing two database, and what we expected from them कि उसके बाद हमें वो यूज और बिजनेस केस की तरफ लेके जाएंगे. अच्छा, थोड़ी कामयाबी भी, बहुत ज़्यादा नहीं भी, लेकिन इनकरेजिंग बात यह है कि लोग आ गए जो कि डेटा वैल्यू चेन में यूज केस तक, बिजनेस केस तक पहुंचाना ही डेटा यूजेज है. और उसमें हिकमत यह है कि इफ द इंसेंटिव्स आर नॉट अपफ्रंट विजिबल टू मी, देन यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू जॉइन इट इन अ वॉलंटरी वे. तो जो बड़े डेटा प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके उनके अपने डेटा को इस्तेमाल करते हुए या कोलैबोरेट करते हुए इस्तेमाल करते हुए बेइंतहा फ़वाइद हैं, हमने कभी कॉन्शियसली सोचा नहीं, और वो कोलैबोरेटिव कल्चर हमने कभी शुरुआत नहीं की. यूपीआई राज से क्यों फ़ायदेमंद है कि उन्होंने ज़बरदस्ती या कोलैबोरेटिवली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया. अब उस पर उन्होंने लेयरिंग करना शुरू कर दी हैं सर्विसेज, पब्लिक और प्राइवेट और सोशल सेफ्टी नेट की हर किस्म की, जिसकी वजह से वो अब इतना वॉल्यूमिनस हो गया है, इतना मुफीद हो गया है, क्योंकि डेटा बजाय खुद एक इनरिचमेंट सोर्स है. डेटा फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, विजडम बढ़ती है, नए मौके नजर आते हैं. तो दिस प्रोसेस इज इन सेल्फ फुलफिलिंग है, सेल्फ इनरिचिंग है. दे लेट इट हैपन, वी नेवर लेट इट हैपन. उसका छोटा जवाब तो ये है. एग्जैक्टली, अकाउंटेबिलिटी बहुत है हमारी.
यहाँ पे अच्छा होता है rather than अभी इंटरेस्ट रेट को डाउन करते हुए वो 58 होती है 0.5% ठीक है उसको और भी इंटरेस्ट रेट से इवन दे आर कंजर्वेटिव तो इसलिए कुछ इदारों को कंजर्वेटिव रहते हैं Try to understand it. It cannot be done in a revolutionary way. It has to be a process. आप कुछ लूज करेंगे, आप कुछ गेन करेंगे उस कोलैबोरेशन से, मैं कुछ लूज करूंगा, मैं गेन करूंगा. गेन्स एंड लॉसेस, कॉस्ट एंड बेनिफिट गुफ्तगू हो, सामने आए तो लोग अग्री करें. या तो ऊपर से नाजिल हो तो अब वो लंबी बात है, उसमें अगर जाएंगे ना तो काफ़ी वक्त चाहिए. मैं इसको कंक्लूड करते हैं. थैंक यू वेरी मच ऑल प्रेजेंटर्स, ऑल दोज हु वर प्रेजेंट हियर. बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, इन्होंने तफसीली बात की, बहुत अच्छा डिस्कस किया इन्होंने. एक दो बातें बस फाइनली कर दूं और उसके बाद इसको कंक्लूड कर देते हैं. जो पहली हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें बात की थी आपने रास्त वाली, तो रास्त वाली बात यूपीआई वाली कंपैरिजन हो गई है, तो मेरा ख्याल है एंगल समझ में आ गया होगा. कंपैरेटिव एनालिसिस बात की थी, डीएफआई और टीएफआई. तो देखें हर बैंक में अभी देखें कि मुल्कों में पॉलिसी का एनवायरनमेंट, पॉलिसी की स्टेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग देना, रूल ऑफ लॉ वो अलग अलग है. रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, स्लज, कितने हम सरकार के लोग वी आर पाउंसिंग ऑन द इन्वेस्टर्स, वो माहौल हर एक का अलग अलग है. तो तीन मुल्कों को क्लब कर देना, उसके बाद फाइंडिंग शायद नहीं आए, तो बेहतर होता कि सिमिलर बैंक्स को आप देखते या सिमिलर कंट्री को देखते जहाँ की पॉलिसी इन्वायरमेंट, एक प्राइवेट सेक्टर कितना क्रेडिट ले रहा है, वो आपको वेरिएबल शायद यूज़ करना चाहिए था. नहीं क्या शिराज साहब, बहुत अच्छी बात की आपने. अब मेरे जैसे लोग जो हम लोग तो लगार्ड्स हैं, सेवी नहीं हैं, उनको लिए बता देते आप कि वेयर इट इज़ डिराइविंग वैल्यू फ्रॉम, तो हमें थोड़ी सी समझने में और आसानी हो जाती. और अगर उसकी जो वो डेमोक्रेसी है उसके अंदर ना, उस पर भी बात कर लेते तो उससे भी हमें होती. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू लर्न मोर फ्रॉम हिम. थैंक यू वेरी मच.